हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 अर्न एंड लर्न। बाकी सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, सो आप लोग जाके देख सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड टेक इट टू द 1K सब्सक्राइबर्स। नाउ अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है अर्न एंड लर्न। चैप्टर का नेम क्या है? अर्न एंड लर्न। So with this we are going to start the chapter. Among the elder boys who came for the cleaning up the serving containers and cutleries after the common meal organized by the PTA, Miss Renu noticed a class first student को Miss Renu ने देखा. हेमंत who worked diligently along with them, इनके साथ जो वर्क कर रहा था विदाउट वेटिंग फॉर एनी इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन का वेट किए बिना वो बर्तन धो रहा था. वंस द टास्क वॉज कम्प्लीटेड, जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है तो वो मैम को बताता है, आई यूजुअली वॉश ऑल द यूटेंसिल्स एंड फिल वाटर इन द वेसल्स बिफोर माई मॉम रिटर्न्स फ्रॉम वर्क. तो वो बताता है कि मेरी मॉम जब वर्क से लौट के आती है उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें क्लीन करके रख देता हूँ. ऑल द एल्डर बॉयज हु हर्ड हिम वर एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइज हो जाते हैं जो और अदर बॉयज थे वो ये चीज़ सुन के. Miss Renu remarked, these days children are hesitant to do even a small work and move away. तो मतलब इतने इस टाइम में जो चिल्ड्रन है तो वो आजकल की जो जनरेशन है वो क्या है, हेसिडेंट है टू डू इवन अ स्मॉल वर्क. One on the reopening day after the winter vacations, Miss Renu asked, "Shall we discuss how you spent your vacations?" and mentioned about the work of Hemant as an introduction. तो हेमंत का जो वर्क था, उसने जो वर्क किया था वो चीज़ उन्होंने बताई. और मिस रेनू ने बोला कि क्या हम वेकेशंस किस तरीके से किसने कैसे स्पेंड करी वो मैं पूछती हूँ. चलिए. Majority of you don't even know who does all the work at home, right? Do we have an attitude that doing work is not our cup of tea or doesn't suit our dignity? तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए सारा काम. It was Jitin who replied to the teacher's question. That's right, ma'am. Even I was thinking so until a few days back. What my cousin said a couple days before has made me ponder about it deeply. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा. एट प्रेजेंट ही इज़ परसुइंग हायर स्टडीज़ इन न्यूयॉर्क. अभी वो न्यूयॉर्क में है, जिसके बारे में जो जितिन है वो बात कर रहा है. ही फाउंड इट टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम देयर. वहाँ से न्यूयॉर्क से उसे स्पॉन्सरशिप मिली है. फॉर्चुनेटली हिज प्रोफेसर अलाउड हिम to stay with him until he got a sponsor. Now, during vacation, my cousin accompanied his professor to meet one of his senior students. That boy was only the son of a businessman tycoon. Now, during the summer break, अब जो summer break चल रहा था from the college, he was sent by his father with the modest money to the sustain in emergency crisis, to find employment opportunities and lodge in an unknown city. उसके फादर ने ये चाहा कि टू मेक हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी विदाउट मतलब एनीथिंग, उन्होंने उसको भेज दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड उसको पैसे भी नहीं दिए. एंड द स्ट्रगल पुअर पीपल मेक टू सर्वाइव, किस तरीके से जो पुअर पीपल होते हैं किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, उसके फादर ने उसको ये चीज़ सिखानी चाहिए. द बॉय स्ट्रगल टू गेट अ जॉब, a place to stay, and was unable to make both ends meet with the meager sum. Finally, जब वो लौटता है after a month's toil and turmoil, he had changed a lot. Finally, when he returned home after a month's toil and turmoil, he changed a lot. तो उसमें changes आए when he rejoined the Pierce University in New York after the summer break
To continue his BBM studies, he had perceived the dignity of work and started living a modest life. अब वो उसने इतनी अच्छी लाइफ गुजारनी शुरू कर दी क्योंकि उसको अच्छी खासी जॉब मिल चुकी थी. Have you heard of the young boy Govind Jaiswal, who has become a successful IAS officer? Here is the story, said Miss Renu. अब वो उसकी स्टोरी बता रही हैं गोविंद जायसवाल की, जो कि एक IAS ऑफिसर है. Once Govind Jaiswal, the son of illiterate rickshaw puller का बेटा, went to play at his considerably rich friend's house. रिच फ्रेंड के घर की तरफ वो गया और वहाँ पे खेल कूद रहा था. ही वॉज इंसल्टेड, उसको इंसल्ट किया गया, डिस्ग्रेस किया गया एंड लिटरली थ्रोन आउट. तो उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई. The arrogant father of his friend yelled out him, "How dare you to come here and mix with my son? Don't you know who are you and where you belong?" However much you study, जितना तो मतलब पढ़ रहे हो, you will still be a rickshaw puller's son. What is your worth? तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं है. मतलब तुम एक रिक्शा पुलर के बेटे हो. माना कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम रहोगे एक रिक्शा पुलर के ही बेटे. यू कैन ओनली टेक योर फादर्स बिजनेस अ बिट फर्दर. तुम थोड़ा सा उस ही फादर की जो बिजनेस है उसको आगे लेके जाओगे. वेर वेरी कॉमन इन हिज लाइफ टू स्टम्बल अपॉन ऑन अ डेली बेसिस. इस तरीके के टॉन्ट और डिस्ग्रेस लोग करते थे उन्हें. बट दीज टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स स्टील्ड गोविंद जैसवाल's determination and initiated a dream journey for him to become an IAS officer. A question, what to do so that people respect me, knocked him deep, and the answer he received from somebody, either you request your father to change his profession or you become great, shook him from inside. It was impossible for him to change the profession of his father, so he chose the second. तो किसी ने उससे ये चीज़ कही कि उसने पहले ये पूछा कि मेरी रेस्पेक्ट कोई करे, ऐसा मैं क्या करूं. तो एक किसी ने उससे बताया, सजेस्ट किया कि आइदर अपने पेरेंट को, अपने फादर को कह दो कि अपना प्रोफेशन चेंज कर ले, और यू मे डू समथिंग ग्रेट दैट लोग तुम्हारी खुद से क्या करें, प्रोफेशन की तारीफ़ें और रेस्पेक्ट करें. तो उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया, दैट इज टू बिकम समथिंग. He studied in government school and college, taking advantage of a student's library. Later, after completion of graduation, he was sent to Delhi with worth rupees 40,000 that his father had managed by selling his only remaining piece of land. Govind ensured that his father's investment don't go in vain and studied 18 hours a day. एक दिन में 18 घंटे की पढ़ाई वो किया करते थे. He earned money by giving coaching to junior students, often skipped 1 or 2 meals a day to save money and practice it rigorously. फिर क्या होता है, 2006 में one of the most emotional and proudest moment came in his life when 23-year-old Govind ranked 48 among 474 successful candidates in the civil service examination. तो 48 रैंक से वो पास हुए. Unlike most of the topper, it was his maiden attempt. Today, Govind Jaiswal is a respected IAS officer whose success story inspires and motivates thousands of youth across India. I'm quite sure that all the youngsters who are living under the deprivation and facing consistent difficulties can accomplish anything and everything provided they had the will and courage, says Govind Jaiswal. There are a lot of children who keep on pestering their parents for unwanted luxuries. तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ मांगने लगते हैं पेरेंट्स से, अनवांटेड चीज़ है. यू मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन द रियांस वेल फाउंडेशन विच डग वेल्स इन युगांडा, अफ्रीका, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट फॉरवर्ड बाय अ स्कूल बॉय नेम्ड Ryan Rillette. Class leader Shif Ali stood up, "Ma'am, as a senior student of the school,
I have an idea. Let us make a habit to save some amount from our pocket money to help the marginalized student or for our higher studies. Supporting Shefali's view, Leah said, we usually look forward for new dresses for birthday functions वगैरह के लिए हम पैसा खर्च कर देते हैं when we buy a new dress, तो we can keep aside an amount from that for this cause. इसके लिए हम नए कपड़े ना खरीद के इसको हम बचा के रखेंगे. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देती है वो, अगर हमारे पेरेंट्स विश टू बाय अ ड्रेस फॉर अमाउंटिंग 2,000 रुपये की वो ड्रेस हो, तो हम उसको 1,000 या 1,500 की ले लें एंड रेस्ट ऑफ द मनी हम उसको क्या कर दें, गुड कॉज के लिए, यानी कि या तो आइदर फॉर आवर हायर स्टडीज और टू गिव द मार्जिनलाइज सेक्शंस पीपल, उनको देने के लिए रख दें. Ma'am, I know many students who do part-time job in the malls or bakeries on weekends. They study well and spend only on their bare necessities and thus became role models for growing generation. I don't deny the fact that some people recklessly spend their earnings on alcohol, cigarettes, etc. We should have common sense and prudence in our decisions. The children who have been raised up without facing any difficulty in their lives will have to face great challenges in future, said Neha. तो यहाँ पे ये बातें चल रही थी कि लोग जो बच्चे होते हैं वो पैसे किसी भी चीज़ों में उड़ा देते हैं, तो फॉर अ गुड कॉज हमें पैसों को क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए. It is an era when people compete to reach new heights without working hard. It is essential for the children to know its ill effects too. To hear the word of Saint Chavara are quite relevant for today. Dear parents, children are God's investment in your hands. You must be very vigilant to bring them up in the best possible way. So give them proper care, protection while keeping a close watch over their educational pursuits. तो उनकी एजुकेशन में सारी चीज़ों में केयर एंड प्रोटेक्शन रखना चाहिए. यू मस्ट ऑल्सो एनकरेज दैम टू डू द हाउस होल्ड वर्क्स appropriate for their age. The society has progressed due to the hard work of the many people. The food served in front of us, the clothes we wear, the house we stay in, and everything we need for a daily life are the fruits of the hard work of the people. Others. Hard work is the stepping stone of stability and growth not only for a family but also for the entire nation. It is not advisable to stay away from working hard however rich we are. जितने भी हम रिच हो जाएं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वर्क को स्टॉप नहीं करना चाहिए. लिविंग विदाउट वर्किंग इज अ श्योर रोड टू डिस्ट्रक्शन. हम अगर किसी काम के बिना जिएंगे तो ये एक तरीके का डिस्ट्रक्शन है, सूनर और लेटर, जल्द ही या फिर आने वाले कल में. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन when you are not working for your living. Innovation is the only way to win. So this was the chapter, that is हमारा लर्न एंड अर्न चैप्टर था. सो विद दिस हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.